Good morning everyone. Let us do PERT network today. What is PERT? Program Evaluation and Review Technique Network. You will be given three timings. One is optimistic timing, pessimistic timing, and which one is most likely timing. So first find the expected time before drawing the network, and the formula goes like this: A plus 4n plus B upon 6. So for 1-2 activity A is 2 plus 4, 4 are 16 plus 6 upon 6, which gives you 16. पहले multiply करने का 16 plus 6, 22, 24 by 6 is 4. Similarly you find for others. Can somebody help me? For 1-3, 6, for 1-4, 13, for 1-2-3, 5, next, 15.83, okay, next, 26, next, 6, next, 16 yes, or 10. 10. Okay, you can find variance for all the activities or find it for only the critical part. Sometimes they ask you to find variance for all the activities. So let us find the variance. Okay, first we'll draw the network first. Come on. Whenever you are given the node numbers, it is very simple to construct the network. सीधा सीधा join कर लीजिए. 1 2 1 3 1 4. 1 4. Correct? And Yeah. then 2 3. Please see. 1 2 1 3 1 4. Correct? And then it is 2 3. Then 2 5. Right? Yes. 3 4. Then 3 3 6. 6. 6 is somewhere here. Yes. 4 6 and 5 6. Very simple. No need to name the activities. In this case, PERT may not required. Crashing में name the activities. Crashing simple हो जाता है. Let's write this expected time. What is it? 4 6 13. 2 3 is 5 and 5. this please 2 5 is 15.83. 3. This is 26. Then what do you have? 6, 3 6 6. Here 10, here 8, 16. 16 and finally 10. this is 10. Make the arrows, write the network paths, sorry. Write the network paths. What is the network path you will be taking? First path is 1 2 2 5 5 6. 1 2 2 5 5 6. Next is 1 3 6. 1 3 4 6 and 1 4 6. Correct? Yes. Let's write down all the completion times. 4 plus 16, 20 plus 10. Yes, 29.83. This is 12. This is 13 and 16 is 29. And this is 6. Sorry, 29 is this. 6 plus 26. 32 plus 16. 51. No, 6 plus 26 is 32. 32 plus 16 is 52. 38, 48. 50. So this is 48 days, correct? So this is my critical part. Sir, और 1 2 3 4 6. 1 2 3 4 6. 1 2 3 4 Correct, correct. One more. 1 2 3 4 6. 6. ऐसे भी आ सकते हैं ना? Correct. What is that? 4 plus 5 9 plus 26 is 35. 35, 35, 41, 51. Correct? So this is your critical path. Yes or no? Yes. And this is your project completion time. Is it correct? Yes. Double arrow please. Double arrow निकालने को नहीं भूलने का. This is your double arrow. Finish till this point. Any problem? Variance find कर लेते हैं. सबका variance बोला है क्या? अगर सबका बोलेंगे तो सबका निकालो. Otherwise only for the critical path. 1 2. क्या है value? 1 2 means first b minus a. 6 minus 2 is 4. 4 square is 16. 16 upon 36. Can you tell me 2 3 का? 36 by 36. Okay. Can you tell me 3 4 का? 900 by 36. 9. 100 by 36. Okay. And 4 6? 324 by 36. 324 by 36. If you are done with all this, Yes. सबसे पहले क्या करना है आपको? वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ निकालना है. तो मतलब क्रिटिकल पाथ जो जो है उसका वेरिएंस ऐड कर लो.
36 को डिवाइड नहीं करने का क्योंकि ऐड करना आसान हो जाता है. You have a common denominator here. Okay? What is Yes. the final answer? 35.44. 35.44. Let's find the standard deviation of this critical path. What is standard deviation of the critical path? 5.9. Yes. Root of project Project variance. variance, हाँ. And what is this root of 35.44? 6 से थोड़ा कम 5.94. Any problem till this point? No. Okay. Yes. Over. This is the first part of PERT network. There is no space on the board. I will rub the board. Any problem till this point? No. इतना निकालने के बाद अब questions लेने का एक one by one. Is it okay? Can I rub the board? Yes. Perfect. Yes. Okay. Let's start. The first question. Please read the question. Full question, please. Draw a network diagram and estimate the expected duration of the project and corresponding variance. See. Expected. Project variance. Yes. What is the probability that the project will complete between 45 to 54 days? Okay. So now we have to find the probability. Probability in what? Yes, please once again. Probability between 45 days. 45 to 50. 45 to 54 days. 4 days. Correct? Yes. So let's find for 45 first. 45 कैसे find करते हैं? Yes, please Z का formula. What is the Z का formula? Z is equal to due date Due date minus minus project completion time upon sigma. What is the due date? 45 हाँ. minus project Minus completion time 51. 51 upon sigma is 5.94. 5.94. Let's see the probability graph Gaussian curve. This is 51. 45 यहाँ 45 आएगा. आएगा. Right? Yes. What is the answer, please? Let me know the answer. Minus 1.01. Minus 1.01 I'm getting. उधर से. Area under the curve निकालेंगे टेबल में से. If you see the area under the curve, what is the answer? Please help. Normal टेबल में से 0.3438. 0.3438 टेबल देखना सबको आता ही है. Yes. And then probability निकालेंगे 45 days का. Probability कैसे निकालते हैं 45 days का? 0.5 से माइनस करने का क्योंकि लेफ्ट में है. लेफ्ट में हाँ. लेफ्ट में है इसलिए माइनस करने का 0.3438. माइनस करेंगे तो कितना आंसर आता है? 0.1562. या फिर 15.62%. लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको बिटवीन का निकालना है. करेक्ट? नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 54 days. Same way. Please start probability of 54 days. How to find? Z. Same Z का formula. Correct. Z is equal to due date minus project completion time upon Sigma. what is the due date? 54. Minus 51 upon 5.94. What is the answer? 0.50. 0.50. Correct? Area under the curve निकालते हैं टेबल में से. What is area under the curve? 0.1915. 0.1915. तो अब इस probability को निकाल लेते हैं 54 days की probability को. अब ये आपको पता है ना क्या किया हमने? This is 51 and 54 is here, right? So how to find this? 0.5 plus, right में है ना? हाँ. 0.5 plus 0.1915, 1915. which gives you 0.6915. लेकिन ये नहीं पूछा था. क्या पूछा था? Probability. between 45 and 54 days. तो between के लिए क्या करने का? दोनों आंसर को subtract कर देने का. बड़ा minus छोटा. Because you have been asked this probability. Please understand. ये probability पूछा था. So what is the answer? 0.6915 minus 0.1562. What is the answer? Final answer, please. 0.5353. 0.5353 या फिर 53.53%. Any problem? No. Read the second problem, please. Second question. Understood? Yeah. Second question, please. What is the probability of completing project within 30 days? Probability within 30 days. Same way आएगा. Yes. कहाँ आएगा 30 days? Left में कि right में? Left. Left में. 30 days. Z. Correct? Z का formula वही है. Due date Due date minus minus PCT upon sigma. What is that due date? 30. 30. Minus 51 51 upon upon 5.94. What is the answer? 3.5. And what is area under the curve? 0.4998. 4998.
एनी प्रॉब्लम? तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे आप? 0.5 माइनस करेंगे, प्लस करेंगे? माइनस माइनस यस, प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग माइनस करेंगे 0.5 माइनस 0.4998. हाउ मच इज द आंसर? 0.0002 0.0002. That's only 2%. Correct? Any problem in this problem? 0.02 आएगा. 0.02. Whatever is the answer? परसेंट. Okay, 0.02%. हाँ. Multiply by 100, please. Correct? Next question. Next question, please. नेक्स्ट Do क्वेश्चन you have any other question? तो अभी इसी को एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लेते हैं. 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ले लेते हैं. हाँ Right? 95% confidence interval में what is the date? What is the due date? Yeah, how many days will it take with 95% confidence interval? So I will write confidence interval is equal to 95%. That means probability is equal to 0.95. So what is area under the curve? 0.95 minus 0.5 is 0.45. Yes. दो जीरो लिखने का. Yes or no? Yes. और अब हम वापस z is equal to due date minus Minus PCP by PCP. sigma लेते हैं. What is z? उल्टा लेने का. हाँ And 0.54500 का तो याद हो जाना चाहिए. 1 point कितना था? 65 I think. 4. 65 लिया था हम लोग ने. 4505 वाला लिया था हम लोग. So ये वैल्यूज तो याद भी हो जानी चाहिए. 1.65. What is the due date? Find करना है. What is project completion time? 51 day 51 upon sigma was 5.94. 5.94. Let's multiply this please. What is the answer? How much? 9.801. And then add this 51. So what do you get? Add this 51. So you get 60.801 due date. Approximately 61 days. 1 day correct? होएगा हाँ तो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा तो ऐसे करने का. फिर दूसरा एक क्वेश्चन था, याद है आपको? पेनल्टी वाला. हाँ If there is a huge penalty for Yes. Huge penalty of exceeding 5 weeks, 5 days. हम 5 days का लेते हैं 1000 पर डे और 5000 से ज़्यादा पेनल्टी होनी चाहिए. तो 5 days 5000 by 1000 करके. तो अगर पेनल्टी 5 days से ऊपर है तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ 51 plus 5 56 days की निकालेंगे. समझ में आया? और फिर जो भी आंसर आएगा, समझो प्रोबेबिलिटी का आंसर जो भी आएगा 0.9599 सपोज एग्जांपल, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पेनलाइज्ड, पेनल्टी भरने की प्रोबेबिलिटी कभी 1 माइनस होगा. एनी प्रॉब्लम? नो तो जो भी आंसर आएगा. तीसरा क्वेश्चन इसमें था, डिड यू सी दिस? और एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोग को दिया था बिडिंग करना है मुझे. आई हैव टू बिड, है ना? एंड द फिक्स्ड कॉस्ट वाज समझो 10 lakhs. Units 10, 100,000, 10,000 lakhs, 10 lakh 10 lakhs, and the variable cost was 10,000 rupees per day. So with 95% confidence interval, how should the manager bid with no profit, no loss? है ना? तो हमको टोटल कॉस्ट निकालने का कितना पड़ेगा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 10,000 इंटू 95% कॉन्फिडेंस से कितने डेज आए थे हमको? 60.801. 61 नहीं लेने का. कभी भी टोटल कॉस्ट निकालने के टाइम 60.801. So when you multiply this, this becomes 60 into 10,000, which is 6 lakhs somewhere, and plus this 10 lakhs. तो आपको 16 लाख समथिंग आएगा आंसर. समझ में आया कि नहीं? तो ये बिडिंग का ये हो गया. नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी डेज वी शुड क्रैश फॉर 95% कॉन्फिडेंस? 61 डेज है ना, और 51 डेज हमको आया था प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम. तो कितने दिन पहले चालू करने का ऐसे भी पूछते हैं. हाउ मेनी डेज बिफोर वी शुड स्टार्ट द नेटवर्क? सो 61 minus 10, I mean minus 51. हाउ मेनी डेज पहले? 10 डेज पहले. याद आया? एक क्वेश्चन ये वाला भी था. हाउ मेनी डेज बिफोर वी शुड
start the project. Yeah, how many days we should crash? 10 days. Any problem? So this is the thing in probability. और अगर वो लोग probability of 54 days पूछते हैं, not completion के पूछते हैं तो 1 से माइनस करने का. Probability of 56 days बोला ना, उसकी जगह बोलेंगे the work is not completed. Probability of work not completed in 54 days. तो पहले 54 days का फाइंड करने का, उसके बाद 1 से माइनस करने का. Is it okay? Yes. Any problem in PERT network लिखने का PERT डायग्राम के वहाँ पे डबल एरो भूलने का नहीं. Is it okay?